Hello you guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good and having fun. I am Garita and in today's video I am going to give you guys a book haul. मैं रिसेंटली गई थी बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में. वहाँ पे किताबें करके कुछ वेबसाइट है, उनका कुछ बुक फेयर था जिसके अंदर यू हैव टू पे फॉर द बॉक्स. तो वहाँ से मैंने एक 1999 का बॉक्स लिया था एंड उसके अंदर जितनी भी बुक्स मैं फिट कर सकती थी, कंडीशन वॉज कि वो बॉक्स जो है वो फ्लैट बंद होना चाहिए, तो उतनी बुक्स आई कैन गेट फॉर 2000. So I want you guys to guess how many books I got for 2000 and tell me in the comments. Okay, now let us start with the first book. मैं पहली बुक ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ and I read it in 4 days. इस बुक के अंदर 560 समथिंग पेजेस हैं and I finished it in 4 days. मैं एक रीडिंग स्लम्प में थी क्योंकि मेरे एंड सेमेस्टर के एग्जाम्स चल रहे थे. मैंने एटलीस्ट 2 महीने से कोई बुक नहीं पढ़ी थी, तो मुझे था कि बहुत मुश्किल है बाहर निकलना. एंड मैंने बुक उठाई जो कि इतनी मोटी थी, तो मुझे था कि लगेगा आराम से 15-20 दिन ये खत्म करने के लिए, बट आई फिनिश इट इन 4 days. तो यू गाइस कैन गेस हाउ गुड ऑफ अ बुक इट वाज. तो फर्स्ट बुक दैट वी हैव इज गॉन बाय मिशेल ग्रांट. नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि कोई तो गया है. बेसिकली इस बुक के अंदर इन द ब्लिंक ऑफ एन आई सडनली एवरीबडी हु इज अबव द एज ऑफ 15 years हैज डिसअपीयर्ड. इन दिस एंटायर वर्ल्ड देयर आर ओनली किड्स हु आर एट द एज ऑफ 14 और अंडर. म्यूटेशंस है पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर. म्यूटेड एनिमल्स हैं, म्यूटेड ह्यूमंस हैं, रैंडम ह्यूमंस के पास रैंडम सुपर पावर्स हैं. एंड नाउ दे हैव टू वर्क आउट इन दिस वर्ल्ड एंड समहाउ फाइंड आउट व्हाट हैज हैपेंड टू देम एंड वेयर आर ऑल द पीपल गोन. सो दैट्स वेयर द नेम हैज कम फ्रॉम. इट इज एन आई वुड गिव दिस बुक एटलीस्ट अ सॉलिड 9. दिस बुक इज अ सॉलिड 9. बहुत सही बुक. आई फिनिश्ड इट इन 4 days एंड it has 4 more parts: hunger, lies, plague and fear. So we are done with the first book. Now for the second book we have The History of Us by Jonathan Harvey. The History of Us by Jonathan Harvey. इसका कवर बहुत सुंदर है. I love this sky blue color. ये बुक नाम से जितनी सिंपल आप लोग को लग रही है, The History of Us and ये फोटो, ये कोई लव स्टोरी नहीं है गाइस. This story is about 3 kids, Kathleen, Adam and Jocelyn. This story is about 3 friends जिसमें से Kathleen wants to be जिसमें से Adam wants to be a writer, Jocelyn wants to sing and Kathleen wants to be an embalmer. Embalmer is somebody who preserves dead bodies using chemicals. So very weird, no? तो इन 3 बच्चों के बारे में, 3 teenagers के बारे में स्टोरी है. एंड हाउ आफ्टर 20 years Kathleen is suddenly a borderline alcoholic, Adam is holding on to a shocking secret and Jocelyn is dead. So the story is about how the lives of these 3 people have changed over these 20 years and what is the shocking secret that Adam is holding. So this is the second book. So the third book that we have is Rabbit Hole by Mark Billingham. इसका कवर देख के सिर्फ मुझे ही साइलेंट पेशेंट की याद आ रही है या एक्चुअली में इसका कवर है वैसा. द फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ दिस बुक मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि ये साइलेंट पेशेंट के जैसी होने वाली है. एंड साइलेंट पेशेंट वॉज अ सॉलिड 10 on 10 बुक. एक दिन में, एक सिटिंग में वो पूरी बुक खत्म की थी मैंने. उसके अंदर अराउंड 300 पेजेस थे. तो एंड आई गॉट इट क्योंकि इसकी रिजेंबलेंस उससे बहुत ज़्यादा थी. वो भी साइकाइट्रिक वार्ड से रिलेटेड थी, ये भी साइकाइट्रिक वार्ड से ही रिलेटेड है. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इन दिस स्टोरी इज, एक पेशेंट है एक साइकाइट्रिक वार्ड के अंदर, उसका मर्डर हो जाता है. बट अपेरेंटली उस साइकाइट्रिक वार्ड के अंदर सारे साइकाइट्रिक पेशेंट्स का ध्यान रखा जाता था, उनका ट्रीटमेंट चलता था. बट वहीं पे एक साइकाइट्रिक पेशेंट का मर्डर हो जाता है. अब एक्यूजेशन फ्लाई कर रहे हैं कि किसने किया है, कि उसी वार्ड का कोई मेंबर था या फिर कोई बाहर से आया था या फिर सुसाइड था क्या. बट उसके बाद स्टोरी में आती है DC एलिस आर्मिटेज, जो कि एक वो है, मैं वर्ड भूल गई, मतलब वो डिटेक्टिव है, वो केस सॉल्व करेंगी. बट द ओनली इशू इज कि एलिस खुद एक साइकाइट्रिक पेशेंट है. दैट इज द ट्विस्ट एंड दैट इज द लाइन दैट हैज स्टक इन माई माइंड एंड आई वॉन्ट टू रीड इट. I think this is going to be my third book because second book is going to be this. मैंने गॉन खत्म कर लिया है. I'm going to start this today and then this. Now on to the fourth book. We have The Girls by Lisa Jewell. She's apparently a million copy best-selling author. कवर कितना डरावना है भाई इसका. So basically this story is about a family that lives in a very posh and very homey area and they have children and they have known their neighbors for a very long time and they have an immense amount of trust on them. And apparently during summers on a midnight a girl is found unconscious in their front yard and nobody knows what has happened to her or what is wrong with her and who is responsible for the entire scenario that has happened. So the story is about that.
So the fifth book that we have is Let the Devil Sleep by John Verdon, and this is how it looks. इस स्टोरी में एक रिटायर्ड NYPD होमिसाइड डिटेक्टिव है जिसका नाम है डेव गुरनी, जिसने बहुत साल पहले एक केस इन्वेस्टिगेट किया था अबाउट रोड साइड किलिंग्स, बट उस केस का कुछ रिजल्ट नहीं निकला तो उसने उसको वैसे ही छोड़ दिया. अब कुछ सालों बाद एक लेडी है, वो डिसाइड करती है कि उसको एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है उस केस के ऊपर. तो उस डॉक्यूमेंट्री के लिए शी आस्क्स डेव टू मीट हर और समथिंग. तो जब वो उससे मिलते हैं तो डेव गुरनी जो है वो वापस एक्साइट हो जाता है कि ऐसा क्या हुआ था कि तब वो रोड साइड किलिंग्स स्टार्ट हुई एंड सडनली एकदम से बंद हो गई, जिसका रीजन किसी को नहीं पता. तो जब वो वापस उस लेडी से मिलता है तो समवेयर हिज इंटरेस्ट जो है वो वापस जाग जाता है एंड ही डिसाइड्स टू इन्वेस्टिगेट द केस अगेन. एंड व्हेन ही इन्वेस्टिगेट्स द केस अगेन ही फाइंड आउट सम न्यू थिंग्स. उसको कुछ नई चीजें पता चलती हैं, एंड जब उसको नई चीजें पता चलती हैं तो अपेरेंटली जो किलर होता है उसको पता चल जाता है कि डेव जो है वो वापस इस केस पे काम कर रहा है. तो वो उसको डराने के लिए उसके फ्रंट यार्ड में एक एरो भेजते हैं जो कि उसको मारने के लिए होता है, बट फॉर्चुनेटली डेव गुरनी सर्वाइव्स. So Dave Gurney wants to somehow find out everything about this killer and why he does these things and why he has stopped doing it. So Dave Gurney decides to set himself as the bait to see if the killer will come or not. That's it about this book. So the next book, that is the sixth book that we have today, is Secrets by Freya North. It's pink in color, so I had to get this because I'm just a girl. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सारी चीजें पिंक पिंक नहीं खरीदती गाइस, ठीक है. सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ गाय एंड अ गर्ल. जो लड़का है, ही हैज अ ब्यूटीफुल हाउस, अ जॉब एंड नो कमिटमेंट्स. ही जस्ट वांट्स अ हाउस कीपर फॉर हिज प्लेस बाय द सी, एंड दिस गर्ल नेम्ड टेस टर्न्स अप फॉर दिस जॉब. He doesn't, the guy Joe doesn't know if Tess is right for the job or not, but when he sees Tess, he feels attracted towards her and he somehow wants to give her the job so that he could be near her. But they both have their secrets. They both don't know where they have come from. Like Joe has no idea where Tess has come from, why Tess was so desperate to get this job, who was Tess running from. And yeah, I guess that's all about this book and it's about their story. इसके समरी से और कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेसिकली. So that's it for this one. Sorry I could not describe it any better. Two women are murdered in the shrine town of Walsingham, North Norfolk, not far from Dr. Ruth Galloway's home. It's a place famous for hosting visions of the Virgin Mary and full of superstition. DCI Nelson finds it frustrating town in which to separate fact from religious myth. A friend of Ruth's, who is a priest, has been receiving threats. The letter writer knows far more about her than they should, and the letters suggest Ruth's friend will be next. This is an avenging angel on the loose in Walsingham. Ruth better pray that she and Nelson find them before they strike again. The Woman in Blue by Ellie Griffiths. In this story, two women are apparently murdered in a town जहाँ पे बहुत ज़्यादा superstitious काम होते हैं, सारे लोग बहुत ज़्यादा superstitious हैं, and DCI Nelson को वो town बहुत frustrating लगता है cause it is difficult to separate fact from religious myth. रूथ का एक फ्रेंड जो कि एक priest है has been receiving threat letters for a very long time, and apparently the person that is sending the letters knows a lot more about Ruth's friend than he should know, and he's somehow blackmailing Ruth and his friend, and he's telling Ruth's friend that he is the next culprit and then Ruth is the next culprit, and Ruth and her friend wants to find out before they kill them. So this is about it for this book. And then we have the last book for today's video, which is Now You See Me by S.J. Bolton. यार लोग पता नहीं स्टिकर क्यों लगा देते हैं, सारी बुक की शक्ल खराब कर देते हैं. कितनी से डरावनी लग रही है, ये लड़की पीछे बैठी है एंड ऑल, एंड ये लगा के सब खराब कर देते हैं. So in this story, the detective constable Lacey Flint, she has never worked on a murder case, but now she is going to work on a murder case for the very first time, and she has to catch a killer who is also a psychopath. So she has to catch a psychopathic murderer for her very first murder case. She decides to set herself as the bait. Ki wo aayega, she's giving herself away and he'll come and get her. But the twist is that the psychopath is already one step ahead of Lacey, and he already has Lacey as her target. Not because Lacey has set herself as the target, but because the psychopath wants Lacey to be the culprit. So with that, we come to an end to this video. This was all for this video. I've given you an overview of 9 books. Make sure to tell me which book you liked the most, and don't forget to guess how many books I got for this video, because in the next part I'm going to give you an answer to that. I hope you guys enjoyed watching this video and had some fun. I'll see you guys in the next video. Bye bye, take care.
बाय। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, एंड कमेंट कर देना, एंड शेयर भी कर देना। प्लीज़ सब कुछ कर देना। बाय बाय।